So next part means uh, as like वाटर जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग में जैसे कुछ प्रोसेस पैरामीटर था, मैंने बताया था कुछ प्रोसेस पैरामीटर है, जो प्रोसेस पैरामीटर इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। ठीक है, वाटर जेट मशीनिंग का जो मैंने जैसे मैंने बात करता था उससे मैंने बताया था कुछ पैरामीटर्स है, तो दो पैरामीटर्स affect the performance of water jet machine process. Okay, the performance कैसे performance किस with respect to what we will consider performance will increase or more performance. तो परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड से काउंट किया जाता है, जैसे मटेरियल रिमूवल रेट। ओके, मीन्स हाउ मच मटेरियल रिमूव पर यूनिट टाइम। ओके, एंड लाइक मशीनिंग क्वालिटी, जो सरफेस मिल है उसका क्वालिटी, सरफेस फिनिश का क्वालिटी किस टाइप की है। ठीक है, तो लाइक दैट एब्रेसिव जेट मशीनिंग में भी कुछ पैरामीटर है, those parameter will affect also the abrasive water jet machining process. Okay, so I think abrasive water jet machining means idea introduction about abrasive water jet machining and different components. तो मैं जस्ट पिछले क्लास में मैंने बताया था। आई थिंक ऑल क्लियर और नॉट क्लियर है कि नहीं? आयुष प्रियांश, एब्रेसिव वाटर जेट यस मशीनिंग का सर। इंट्रोडक्शन एंड उसका डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, वो क्लियर है ना? नाउ now we'll discuss about the process parameters. Some process parameters those affect the performance of abrasive water jet machining. तो प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है? During water jet machining and abrasive water jet machining are most nearly same. डिफरेंस क्या है इसमें? एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में डिफरेंस क्या है अमित? जी सर। इसमें डिफरेंस क्या है? वाटर जेट मशीनिंग एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आर नियरली सेम, मतलब जो सर डिफरेंस डिफरेंस है। ये उसमें एब्रेसिव पार्टिकल इस्तेमाल होते हाँ, हैं, इसमें वाटर एब्रेसिव एब्रेसिव वाटर पार्टिकल यूज होते हैं उसमें, और हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज होता है वो। हार्ड मटेरियल यूज होता है। तो प्रोसेस पैरामीटर जो होगी नियरली सेम ही होगी, जस्ट इसमें दो एक प्रोसेस पैरामीटर ऐड होगी, है ना? जो प्रोसेस पैरामीटर वाटर जेट मशीनिंग के समय में बताया था, तो सेम प्रोसेस पैरामीटर होगी। मीन्स जो प्रोसेस पैरामीटर मीन्स क्या है? कुछ पैरामीटर है जो मटेरियल रिमूवल रेट और मशीनिंग क्वालिटी, सरफेस फिनिश क्वालिटी वो इफेक्ट करेंगे, है ना? तो डेप्थ ऑफ काट ये भी इफेक्ट करेंगे। तो और एवरेज वाटर जेट मशीनिंग में सेम प्रोसेस पैरामीटर होगी, बट इसमें सब ऐड कुछ ऐड होगी ड्यू टू एडिंग ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स। ओके, तो प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकती है? मैंने ये एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग वाटर जेट मशीनिंग में ये बेसिक एग्जांपल मैंने दिया था, है ना? इसमें क्या क्या हो सकती है प्रोसेस पैरामीटर हमें? यस सर। क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर हो सकती है? इसमें सर वेलोसिटी और ये प्रेशर और उसका वेलोसिटी, नोजल का प्रेशर, एरिया। नोजल का डायमीटर। जी हाँ, नोजल का डायमीटर एंड तो वाटर जेट मशीनिंग में भी यही सेम था, बट इसमें और एक ऐड हो सकती है जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहा हूँ, है ना? एब्रेसिव पार्टिकल का
एब्रेसिव फ्लो रेट हो सकती है, एब्रेसिव पार्टिकल साइज भी हो सकती है, कितना एब्रेसिव पार्टिकल जो यूज कर रहा हूँ, कितना फ्लो रेट में कर रहा हूँ, कितना उसका साइज कितनी है ना। तो प्रोसेस पैरामीटर एंड और उसके अलावा और क्या हो सकती है? वेलोसिटी, प्रेशर, नोजल डायमीटर और भी पैरामीटर मैंने डिस्कस किए थे। समीर, हेलो। यस, यस सर। उसके अलावा और क्या कौन सी पैरामीटर हो सकती है? और ये तो बेसिक एग्जांपल इसके। और जस्ट थिंक इसमें और क्या हो सकती है? जो ये जो पानी एक तो ऑयल पर स्ट्राइक कर रहा हो, वो ऑयल का एरोड होने के लिए और क्या हो सकती है, ज़्यादा एरोड हेलो। करने के लिए? कितना डिस्टेंस पर तुम ये कर रहे हो, वो भी एक है ना, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। हेलो। यस सर। स्टैंड। सर मेरे को और एक तो ये प्रेशर हो सकता है। जैसा तो बताया, प्रसार, वेलोसिटी, फ्लो रेट, वेलोसिटी प्रसार, और वेलोसिटी, उस और एरिया हो गया। एरिया, नोजल डायमीटर के, हाँ, तो डायमीटर से कहते हैं नोजल डायमीटर। ओके। एब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहा हो तो एब्रेसिव पार्टिकल की फ्लो रेट, साइज, ठीक है। जी सर। और हो सकती है कितना डिस्टेंस से मैंने स्ट्राइक कर रहा हूँ, है ना। जो पाइप है, वॉल से पाइप का डिस्टेंस कितनी है, वो भी एक पैरामीटर होगी ना। अगर मैं जी ज़्यादा सर। डिस्टेंस से करूँगा तो इतना छेद होगी, वॉल नहीं होगी ना। नहीं होगी। बट नजदीक से करूँगा तो वॉल छेद हो जाएगा। छेद जी होगा सर। मीन्स क्या? डेप्थ ऑफ काट ज़्यादा मिलेगा। डेप्थ ऑफ काट ज़्यादा मिलेगा, वाट मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगी, है ना। जी सर। ओके। इवन जो वॉल है, जो इसमें जो वॉल है, वॉल किस टाइप की वॉल है? मिट्टी की अगर वॉल होगी तो ज़्यादा छेद होगी। अगर ब्रिज यस की सर। वॉल है तो ज़्यादा होगी, तो नहीं होगी ना। तो मटेरियल, यस सर। वॉल जब कंसिडर है, जो वॉल है, जो मटेरियल, मटेरियल किस टाइप की मटेरियल है, ठीक है, वो भी एक पैरामीटर है। ओके। यस सर। तो दीज आर द प्रोसेस पैरामीटर। क्या क्या हो सकती है? वाटर फ्लो रेट, वाटर प्रेशर, वाटर ठीक है, फ्लो रेट, वाटर प्रेशर, वाटर वेलोसिटी। प्रेशर, एब्रेसिव, इसमें एब्रेसिव भी यूज कर रहा हूँ तो एब्रेसिव जी का फ्लो रेट भी हो सकती है। एब्रेसिव किस टाइप की एब्रेसिव मटेरियल यूज कर रहा हूँ, एवं एब्रेसिव पार्टिकल साइज भी हो सकती है। किस जी टाइप की सर। इसकी जो एब्रेसिव पार्टिकल साइज जो मेरा उसका साइज कितनी है, ठीक है। अगर जी इसमें जो पानी आ रही है ना, अगर इसमें जी थोड़ा थोड़ा मीन्स सैंड बाली की ये रहेगी तो वाल ज्यादा छेद होने का चांसेस है ना। तो जी सर। लाइक कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में भी सेम है। अगर एब्रेसिव पार्टिकल का साइज, फ्लो रेट एंड किस टाइप की एब्रेसिव मटेरियल मैंने यूज कर रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट, जी सर। नोजल डायमीटर। नोजल डायमीटर से भी डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें पाइप का जो माउथ की ओपनिंग है, अगर ज़्यादा होगी तो उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होगी। मीन्स नोजल डायमीटर इज वन टाइप पैरामीटर, है ना। ट्रावर्स रेट, ट्रावर्स रेट मीन्स जो नोजल नोजल को जो ये कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, यहाँ पाइप को मूव कर रहा है ना, ऐसे करके। मीन्स सारे वाल पर अगर मैंने ये करना चाहता हूँ तो मूव, पाइप को मूव करना चाहिए, लाइक ये नोजल को ऐसे मूव करना चाहिए। तो किस रेट में मैंने नोजल को मूव करूंगा, दैट इज ट्रावर्स रेट, है ना। यस सर। अदर इज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मीन्स कितना डिस्टेंस से मैंने
उसको स्ट्राइक कर रहा हूँ, जो जेट वाटर एंड एब्रेसिव पार्टिकल का जो जेट है उसमें कितना डिस्टेंस मैंने स्ट्राइक कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज मटेरियल प्रॉपर्टीज मीन्स किस टाइप की मटेरियल। ओके, कि तो जो वर्क पीस है वर्क पीस का मटेरियल किस टाइप की मटेरियल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ब्रिटिल है, प्लास्टिक है, सिरामिक्स है, किस टाइप की है। ओके, so first water jet pressure. So in water jet pressure there is actually critical water jet pressure means उसको critical pressure से ज़्यादा pressure होना चाहिए। Okay, means the pressure of the water jet should be more than that critical pressure. अगर नहीं हो उस critical pressure से अगर नहीं होगी then material will not cut, material cut नहीं होगा। So there is a minimum critical pressure required to cut the material. Okay, and here is the minimum pressure. The minimum critical pressure is known as actually critical pressure, and it is noted as EC. E for pressure, C for critical. Okay, so some minimum critical pressure is required. A minimum critical pressure PC is because of the minimum abrasive particle velocity required to cut a specific material. Okay, किस टाइप की मटेरियल काट करना चाहता हूँ उस डिपेंडिंग ऑन दैट मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर चाहिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, हार्ड मटेरियल है तो उसका क्रिटिकल प्रेशर ज़्यादा होगी, सॉफ्ट मटेरियल है तो उसका क्रिटिकल प्रेशर कम होगी। अगर सॉफ्ट मटेरियल में ज़्यादा क्रिटिकल प्रेशर होगा उनसे ज़्यादा प्रेशर ये करूँगा उसमें कटिंग जो होगी वो प्रिसीजन कटिंग नहीं मिलेगा। ओके, सो ये मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर है, मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करनी है। ओके, क्लियर। So the value of PC for cutting of mild steel is this is an example for mild steel कट करने के लिए जो मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर है वो 20 to 27 MPa है। This is the range. So for safety precaution or limit more than 27 or more than 30 MPa actually प्रेशर रहना चाहिए फॉर कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील की कट करने के लिए टू एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग द प्रेशर शुड बी मोर देन 30 MPa। क्लियर। Another is the Yes, sir. water flow rate. Okay, so this water flow rate also depend so also affect the depth of cut. Okay, how अगर वाटर फ्लो रेट जो वाटर जेट जो फ्लो हो रही है दिस फ्लो रेट इज मोर मीन्स इंक्रीज द वाटर फ्लो रेट देन डेप्थ ऑफ कट विल बी मोर, है ना। जो पानी दीवार पे स्ट्राइक कर रहा हुआ अगर उसका फ्लो रेट ज़्यादा है देन डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा छेद होगी। So, depth of cut is affected by varying the water flow rate, increasing the nozzle diameter while maintaining the constant pressure. Okay, and so if you increase the nozzle diameter, then and by increasing the nozzle diameter, more water will flow. Means amount of water will flow per unit the amount of water per unit time भी more। अगर डायमीटर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाटर फ्लो होगी ना, ज़्यादा वाटर निकलेंगे वो नोजल से। ओके, और इफ यू कंसीडर पाइप पाइप से ज़्यादा पानी निकलेंगे तो बट अगर प्रेशर कांस्टेंट मीन्स इफ द प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट डायमीटर बढ़ाने से प्रेशर घट सकती है बट अगर प्रेशर कांस्टेंट है मेंटेन करूंगा एंड इफ यू इंक्रीज द डायमीटर देन water flow rate will increase and this depth of cut will increase or affect। Okay, so as the flow rate increases the slope of the cut decreases because of the saturation point is reached। ऐसे नहीं है जो
मैं डायमीटर को ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा, वाटर फ्लो रेट ज़्यादा होगी, इनसे ज़्यादा ही डेप्थ ऑफ काट और ज़्यादा मटेरियल रिमूवल होगा, ये नहीं है। इनसे इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है और ऑप्टिमम पॉइंट है, मीन्स ऑप्टिमम फ्लो रेट है। उस ऑप्टिमम फ्लो रेट से अगर ज़्यादा फ्लो रेट होगी तो देन डेप्थ ऑफ काट और मटेरियल रिमूवल रेट में डिक्रीज। ओके, कैसे डिक्रीज होगी? मीन्स जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहा हूँ, एब्रेसिव पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स हो रही है। अगर वाटर ज़्यादा, मीन्स वाटर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा आ रही है बट एब्रेसिव पार्टिकल जो फ्लोरेट है वो कम है, देन properly में properly proper अमाउंट ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल से नहीं मिलेगा, एंड जो मटेरियल रिमूव है वो जाती है। तो एक ऑप्टिमम फ्लो रेट है, उस ऑप्टिमम फ्लो रेट के बाद अगर ज़्यादा करूँगा, मीन्स इंक्रीज करूँगा फ्लो रेट, देन इट में डिक्रीज, मीन्स मटेरियल रिमूवल रेट और डेप्थ ऑफ काट डिक्रीज हो सकती है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Now, so this is the flow rate of water. Means water flow कर रहा हूँ, अब तो इसमें considering the abrasive particle, the flow rate of abrasive particle is constant, ठीक है। मीन्स abrasive particle का flow rate नहीं चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ कौन सी? वाटर का फ्लो रेट चेंज कर रहा हूँ। अगर वाटर फ्लो रेट ज़्यादा करूँगा तो मेटेरियल रिमूवल रेट और डेप्थ ऑफ काट इंक्रीज होगी, बट कितना तक इंक्रीज होगी? एक ऑप्टिमम लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक। ओके, आफ्टर दैट ऑप्टिमम लेवल द डेप्थ ऑफ काट और मटेरियल रिमूवल रेट में डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल, अमाउंट ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स हो रही है वो उसमें कम होगी, ठीक है। वाटर ज़्यादा आ रही है तो एब्रेसिव पार्टिकल कम आ रही है, इन ऑप्टिमम मिक्सिंग नहीं मिलेगा एंड मटेरियल रिमूवल डिक्रीज होगी। क्लियर? So, so this is effect of water flow rate, ठीक है। क्लियर? मीन्स ऐसे हो सकती है, Yes, मीन्स मटेरियल रिमूवल रेट अगर मैं प्लॉट करूंगा along this y axis, so this material removal rate will increase and after reaching the optimum it will decrease. So along this x axis this is actually rate flow rate, okay, means water flow rate, and along y axis is uh, depth of cut or material removal rate, or or depth of cut। Okay, so increase होगी after optimum, it will decrease। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल ऑप्टिमम नहीं मिलेगा। ओके, नाउ नाउ इफ द एब्रेसिव फ्लो रेट, अगर एब्रेसिव फ्लो रेट को चेंज करूंगा एंड कंसिडरिंग द वाटर फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ठीक है, वाटर फ्लो रेट कांस्टेंट है, बट मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एब्रेसिव फ्लो रेट, मीन्स एब्रेसिव ज़्यादा ज़्यादा एब्रेसिव अमाउंट ऑफ एब्रेसिव ज़्यादा मैं फ्लो कर रहा हूँ पर यूनिट टाइम। ओके, क्या होगी एब्रेसिव फ्लो रेट? देन क्या होगी? तो डेप्थ ऑफ काट मिलेगी, तो डेप्थ ऑफ काट और मटेरियल रेट, डेप्थ ऑफ काट के साथ जो एब्रेसिव फ्लो रेट है ये लिनियर रिलेशनशिप है, मीन्स अगर ज़्यादा एब्रेसिव पार्टिकल फ्लो करूंगा तो डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा मिलेगी, बट इसमें भी एक ऑप्टिमम कंडीशन है, ऑप्टिमम पॉइंट है। मीन्स आफ्टर above this critical flow rate, above the critical flow rate, the cutting efficiency decrease। ओके, मीन्स अगर मैं प्लॉट करूंगा अब जो एब्रेसिव एब्रेसिव फ्लो रेट, ओके, तो अगर एब्रेसिव फ्लो रेट में इंक्रीज करूंगा देन दिस इज डेप्थ ऑफ काट डी सी। ओके, so this depth of cut will increase linearly like that, okay, but after this optimum flow rate, optimum abrasive flow rate, this depth of cut will decrease। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि
अ, जो एब्रेसिव पार्टिकल फ्लो रेट अगर ज़्यादा करूँगा एंड एब्रेसिव वाटर का जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है। ओके, तो तो जो नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल आप इसके ऊपर टाइप करेंगे देट विल बी मोर, मीन्स मोर नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स टाइप करेंगे। बट जो एब्रेसिव पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उतना रेट नहीं रहेगी। क्यों वो इतना नहीं रहेगी? क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ से मिल रहा है फ्रॉम फ्लो रेट ऑफ सर वाटर। वाटर वाटर। ये है ना, वाटर का जो फ्लो रेट है उसी से मिलेगा। वाटर का फ्लो जी रेट सर। कांस्टेंट है तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो उसका फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, बट नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स विल इंक्रीज। ओके, तो यस सर। नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इंक्रीज हो रहे, तो इसमें इतना इफेक्ट नहीं, इफेक्टिव कटिंग नहीं होगी, मीन्स डेप्थ ऑफ कट लग हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्लियर। यस सर। मैं नेक्स्ट इज एब्रेसिव पार्टिकल साइज एंड टाइप। किस टाइप की एब्रेसिव पार्टिकल यूज करूंगा एंड उसकी साइज। ओके, तो फर्स्ट एब्रेसिव पार्टिकल साइज, द मोस्ट कॉमन एब्रेसिव पार्टिकल साइज इज फॉर एब्रेसिव वाटर जेट मशीन फ्रॉम 100 टू 150 ग्रेड। ओके, ग्रेड एक्चुअली यूनिट ऑफ साइज है ना। यस सर। ग्रेड मीन कैसे ग्रेड काउंट किया जाता है? सर मुझे पता नहीं था, पर मेरे को ये कि ये पार्टिकल साइज ग्रिट में काउंट होता है, मैं तो ही सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने ग्रेड, ग्रेड से एक्चुअली ये है ग्रेड साइज। ग्रेड है मैथ पर यूनिट लेंथ। मैथ पर यूनिट लेंथ मीन्स ग्रेड साइज कैसे ये किया जाता है, जैसे सपोज उसको क्या कहते हैं, जो बंगाली में तो इसको चालू नहीं कहते, तो ऐसे करके ये रहता है ना। ओके, तो अगर मैं पाउडर मटेरियल या उसके ऊपर रखकर मैंने ये करूँगा, इसको सेक सेक करूँगा, तो पाउडर मटेरियल क्या होगी, इसका जो चिपक जाएगा। साइज है हाँ नीचे आएगा ना। ठीक है, जी सर। तो दिस दिस डिपेंड्स ऑन दिस गैप, ये गैप से ऊपर डिपेंड करेगा ना। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, बंगाली में तो चालू नहीं कहते। छलनी। छलनी। चालनी, चालनी है ना। तो ये चालनी आटा से अगर छानने ये वाली। हाँ आटा चलने वाली, तो ये आटा चलने वाले इसका जो साइज है, दिस साइज इज कॉल्ड द ग्रिड साइज। ठीक है, एंड ये ग्रिड साइज कैसे काउंट किया जाता है, पार एरिया, पर एरिया में कितना ये गैप है। ठीक है, तो ओके सर। ज्यादा ग्रिड साइज मीन उसका साइज कम है। बट अच्छा, ज्यादा समझ रहे हो मतलब ना? कम है। ठीक है सर। हाँ, पार्टिकल साइज कम है ना, जी ग्रिड सर। साइज ज्यादा। नंबर ऑफ जो होल है पर यूनिट एरिया, दैट इज एक्चुअली ग्रिड साइज। ठीक है, तो ओके सर। ग्रिड साइज ज्यादा है मीन्स इसका पार्टिकल पार्टिकल साइज जो है इन mm कम है। ठीक ओके है, सर। ठीक है। तो मोर तो एब्रेसिव पार्टिकल यूज करूंगा, एब्रेसिव पार्टिकल का ग्रिड साइज 100 टू 150 ग्रिड। ओके सर। The optimum abrasive particle size also exists for each particular nozzle chamber configuration. This also depends on the चेम्बर कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो, मीन्स कि जो नोजल नोजल में जो
mixing chamber this also depends on the particle size means, but mainly actually this particle size abrasive particle size uh, depends on the what type of material do you want to machine. Okay, another is abrasive particle type. So, type means the type of abrasive used is also an important parameter. This type of abrasive particle is used like garnet, silica, silicon carbide are the most commonly used abrasives. Okay, this type of abrasive particle is used in abrasive water jet machining. Okay, means depending on the वर्कपीस मटेरियल किस टाइप की वर्कपीस मटेरियल है डिपेंडिंग ऑन दैट दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स आर यूज्ड. ओके, ओके सर. अगर मटेरियल ज़्यादा हार्ड है देन सिलिकॉन कार्बाइड मोर हार्ड. Okay, so depending on the type of material or workpiece material, this commonly garnet, silica or silicon carbide abrasive particles are used. So this selection of abrasive type is usually determined by the hardness of the material that to be cut. तो मटेरियल को काट करूंगा मशीनिंग करूंगा उसका हार्डनेस कितनी है. So depending on that, we will select the different abrasive type. Okay, different type of abrasive particles and and their and their great size. Okay, traverse rate. So traverse rate means जो nozzle को move कर रहा हूँ. So this is actually the moving the nozzle is actually the traverse rate. So तो जब थिंक जो पाइप से वाल को मैं छेद कर रहा हूँ, अगर पाइप को मैं ज़्यादा स्पीड में ये करूँगा ट्रैवल करूँगा तो इतना छेद नहीं होगी, है ना. तो इफ यू इंक्रीज द प्रवास रेट देन डेप्थ ऑफ काट विल डिक्रीज मीन्स ज़्यादा छेद नहीं होगी, है ना. बट यस इसमें सर. भी बट इसमें भी एक ये है मीन्स इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए. अगर इतना स्लो है जो पाइप को मूव कर रहा हूँ इतना स्लो रेट में कर रहा हूँ तो दिस ऑल्सो इफेक्ट इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए. तो देयर इज ऑल्सो मिनिमम क्रिटिकल प्रवास रेट. ओके, बिलो व्हिच फर्दर इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ कट आर नॉट ऑब्टेन्ड. ओके, मीन्स अगर जो मिनिमम क्रिटिकल प्रवास रेट है उससे कम होगी तो मैक्सिमम वॉल छेद नहीं होगी. ओके, तो प्रवास रेट इन केस ऑफ प्रवास रेट दे आर ऑल्सो ए ऑप्टिमम और मिनिमम क्रिटिकल प्रवास रेट है. तो मिनिमम क्रिटिकल प्रवास रेट से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, if the प्रवास rate is not maintained at a relatively uniform velocity, the rough edge will result because of the nature of the process. जमीन से जो नोजल को ट्रैवर्स कर रहा हूँ अगर उसका स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं होगी यूनिफॉर्म नहीं होगी देन जो सरफेस मिलेगी तो कटिंग सरफेस उतना स्मूथ नहीं मिलेगा, राफ मिलेगा. सपोज जो वाल छेद कर रहे हो पाइप से फास्ट वेरी स्पीडली किए हो देन स्लो कर रहे हो देन स्पीड कर रहे हो तो सारे वाल जो छेद होगी उसमें जो सरफेस मिलेगा तो यूनिफॉर्म सरफेस नहीं मिलेगी तो फाइन सरफेस नहीं मिलेगी, राफ सरफेस मिलेगी. कहाँ ज़्यादा छेद होगी कहाँ कम छेद होगी, है ना. तो इस प्रवास रेट rate of the so have to maintain a uniform velocity. The Kawas rate should maintain a uniform velocity to get the fine fine thin surface. Okay. ओके सर.
extent of distance. So this extent of distance with depth of cut is related to uh, linear. In this case, also a linear relationship is there. Linear relationship means बट इसमें linear relationship किस टाइप की होगी? अगर extent of distance मैंने इंक्रीज करूंगा तो देन डेप्थ ऑफ कट क्या होगी? Depth of cut and the extent of distance are related to linear relationship. Means depth of extent of distance पता है ना? Extent of distance means क्या? कितना दूर से मैंने स्ट्राइक कर रहा हूँ, है ना? कितना दूर से मैंने जो पानी के वाल पर मैंने स्ट्राइक कर रहा हूँ, कितना डिस्टेंस से कर रहा हूँ। और aggressive water jet means जो नोजल एंड द वाटर surface जो top surface है, top surface, so from top surface of the workpiece to the nozzle tip, that the distance है, this distance is called extent of distance. अगर extent of distance से ज़्यादा होगी then depth of cut कितनी होगी? इससे कम होगी और ज़्यादा होगी? अगर जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हम्म? स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डेप्थ ऑफ कट भी ज्यादा होगी। ज़्यादा होगी? हाँ, सर लीनियर लीनियर रिलेटिव, रिलेशनशिप है। लीनियर अगर वो इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करना चाहिए। ओके। लीनियर लीनियर रिलेशनशिप का मीनिंग क्या यही है, जो अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज ही होगी। हम्म, अमित? सर लीनियर मतलब इस ये कह रहा है कि लीनियर रिलेशन तो होता है कि हम्म, अगर एक इंक्रीज करता है, हाँ वही है सर, एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करता है लीनियर रिलेशनशिप में तो। कैसे? कैसे जैसे लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है? y इक्वल अच्छा टू लीनियर लीनियर वैसे, रिलेशनशिप मीन्स क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना। जी लीनियर जी, एम एक्स रिलेशनशिप प्लस मीन्स सी, क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स एक्स प्लस सी, प्लस सी, है ना? अगर जी तो इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स, है ना? जी सर, दिस एक्स इज extent of distance, एसओडी। जी सर, जी ठीक है, एसओडी। अगर एसओडी में अगर इफ यू इंक्रीज दिस एसओडी मीन्स एक्स, इफ यू इंक्रीज दिस एक्स देन वाई विल इंक्रीज। वाह इंक्रीज, जी Okay, सर, depth of cut increase. Now, just a minute. So depth of cut will increase. So this is actually linear equation. This जी equation may be y is equal to minus mx plus c. हम्म, ये भी हो सकती है ना? This जी is सर, also a linear equation, जी minus सर, mx plus c. So if you यस सर, increase this x, then what will be the value of y? वाई विल डिक्रीज, Decrease. So this also is linear. So linear relationship that does not mean जो increase. If you increase then the next means the way means दूसरा पैरामीटर इंक्रीज होगी। लिनियर रिलेशनशिप मीन्स इसमें लिनियरली वेरिएशन आएगी, वेरिएशन आएगी। पावर टाइप की वेरिएशन नहीं होगी, जी सर, एक्सपोनेंशियल टाइप की वेरिएशन नहीं होगी। ओके, तो इसमें एक्चुअली स्लोप जो है नेगेटिव है। ओके, ओके सर, स्लोप नेगेटिव है। तो इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस, एक्सटेंड ऑफ डिस्टेंस अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगी डेप्थ ऑफ कट? अगर कम हो जाए, ज्यादा दूर से मैंने छेद करूंगा वाल, तो इतना छेद होगी नहीं होगी ना? नहीं तो नहीं होगी, क्या होगी? कम डिक्रीज हो गया, होगी like, okay, so it will decrease like that. So if you increase the distance, extent of distance, then
इट विल डिक्रीज, डिक्रीज। है ना। तो इसमें स्लोप जो है नेगेटिव स्लोप है। ओके, जी सर। नाउ इसमें भी एक सो इंक्रीजिंग द एसओडी डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट, है ना। इफ यू इंक्रीज द एसओडी extent of distance then depth of cut will decrease, है ना, डिक्रीज। है ना। So when mixing is efficient and process parameter correct, a deviation of a stand of distance of up to plus minus 12.7 millimeter means a up to 12 millimeter deviation कर सकते हो अगर मिक्सिंग जो है मीन्स एब्रेसिव पार्टिकल एंड वाटर का विथ वाटर अगर मिक्सिंग एफिशिएंसी सही है देन यू कैन वेरी दिस distances for the up to plus minus 12. Okay, without to tolerate the without means tolerating the quality of the car. Okay, means if you change this SOD up to 12 mm मीन्स अगर ज़्यादा 12 mm में ज़्यादा करेंगे और 12 mm घटाएंगे जो ऑप्टिमम है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिक्सिंग जो है एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर की इफ यू इफ द मिक्सिंग इज proper mixing. Okay. If the SOD are increased to a distance of about 80 millimeter, the process will no longer cut but will efficiently clean the de-scale surface. Okay, मीन्स अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ज़्यादा करूँगा देन डेप्थ ऑफ कट नहीं मिलेगी मीन्स मटेरियल नॉट कट मटेरियल डज नॉट कट। ओके, मटेरियल कट नहीं होगी, है ना। अगर पाइप पे से जब पानी ये कर रहा हूँ वॉल पर अगर ज़्यादा डिस्टेंस से मैंने ये करूँगा तो वॉल छेद नहीं होगी, क्या होगी, वॉल यस। वॉल क्या होगी, क्लीन होगी, साफ हो जाए। साफ साफ होगा, हो, साफ क्लीन हो होगी। जाएगी। ठीक है, लाइक दैट अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मैंने ज़्यादा करूँगा तो डेप्थ ऑफ काट नहीं मिलेगी मीन्स मटेरियल काट नहीं होगी, ओनली क्या होगी जो डेब्रिस ये हुआ क्लीन हो था जाएगी। वो क्लीन होगी। ओके, so, what are the process capabilities? Now, abrasive water jet machining can be thought as of a combination of water jet machining and abrasive jet machining particles. In abrasive jet machining, abrasive particles are flow by gas, and gas से abrasive particle flow किया जाता है in abrasive jet machining. मैंने बताया था बिफोर E2 एग्जाम से पहले मैंने क्लास किया था एब्रेसिव जेट मशीनिंग, तो इसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग एब्रेसिव पार्टिकल फ्लो किया जाता है थ्रू गैस। तो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर जेट मशीनिंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रिंसिपल्स। But in terms of capability, abrasive water jet machining combines the best of both processes. इनसे वाटर जेट मशीनिंग में जो परफॉर्मेंस मिलेगी एंड ओनली एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो परफॉर्मेंस मिलेगी तो इन एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में क्या बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी कंपेयर टू only water jet machining and abrasive jet machining. Okay, so abrasive water jet machining combines the best of the both processes. Okay, resulting in new process that can are the material whether they are hard or soft at high depth and in very thick section. Okay, and so sometimes only water jet machining is not possible to cut the hard material. ओके, हार्ड मटेरियल करने के लिए इतना सुटेबल नहीं है इवन तो कैपेबिलिटी भी नहीं है। ओके, बाय ओनली वाटर जेट मशीनिंग इवन ओनली एब्रेसिव जेट मशीनिंग some hard material cannot be cut, but this abrasive water jet machining
इसमें दोनों का प्रिंसिपल एड ओरिएंट you will get a better performance. Means you can cut hard or soft material also. Okay, if you want to cut the soft material, then एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा फ्लो नहीं करूँगा, है ना? अगर एब्रेसिव हार्ड मटेरियल काटता नहीं, एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा फ्लो करूँगा, मैंने यस सर। एब्रेसिव पार्टिकल का साइज ऑप्टिमाइज करूँगा, एब्रेसिव पार्टिकल जो टाइप है उसका ऑप्टिमाइज करूँगा, ठीक है? So you can cut from hard to soft material. Okay, so this is the best means uh, new technique by combining the principles of water jet machining and abrasive jet machining. Okay, abrasive water jet machining can cut material as thick as 200 millimeters. Okay, means up to 20 centimeters. Okay, but only water jet machining it is not possible to cut up to 20 centimeter thick material. Okay, but this abrasive water jet machining is cut up to 20 mm, 20 centimeter, 200 millimeter. Just to think 20 centimeter means how much thickness, है ना? यस सर। एक स्टील स्टील स्केल की 12 सेंटीमीटर होती है, इससे जस्ट डबल, मतलब 20 सेंटीमीटर ठीक की मटेरियल काट कर सकती है बाय एब्रेसिव वाटर जेट मशीन एंड स्टिल मेंटेन ए कंपैरेटिवली नैरो काट, उनसे जो काट की जो ये मिलेगी उनसे जो विथ मिलेगी, तो नैरो मीन्स जैसे नाइफ से काट किया जाता है, नाइफ से काट जी करने सर। तो नैरो काट मिलती है, तो बाय जी सर। एब्रेसिव वाटर जेट मशीन यू कैन गेट ए वेरी नैरो काट. Okay, so this narrow carp, the width of this narrow carp you can get 1.5 to 2.3 mm, means less than 2.5 in mm. Okay, this is यस means सर। this is possible by aggressive water jet machine. The resulting taper of the part edge is a function of the material hardness, where hard material have the hardest scarp at the top of the cut and soft material have the widest scarp at the bottom of the cut. Means, जो हार्ड मटेरियल है तो टॉप में तो काट मिलेगी, काट मीन्स तो विथ है, काटिंग की जो विथ हो रही है उसका ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू द बॉटम. ओके, क्योंकि हार्ड जो मटेरियल है फर्स्ट इनिशियली कट करने के लिए तो उसमें थोड़ा ज़्यादा विथ हो जाती है, और सॉफ्ट मटेरियल जो है उसमें टॉप में इतना विथ नहीं मिलेगी, बट बॉटम में हो सकती है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है एंड में, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होती है. ओके, ओके सर। so application of this abrasive water jet machining, like paint removal, cutting of soft material, cutting of hard material, cutting frozen meat, textile, leather industry, magician, surgery, even in surgery also this machining process is also painting, cutting, pocket milling, drilling, thing also we performed by this abrasive water jet machining process. Okay. So advantage is cheap than the other process. So cheaper than the other process. So with respect to what process this is cheap, कौन सी process है? Like a laser beam machining. Okay. इलेक्ट्रॉन बीम मैचिनिंग, लेजर बीम मैचिनिंग या लेजर सोर्स की जरूरत है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोसेस की ज़्यादा हो. Okay, but in this process only water and some abrasive particles only, है ना? मीन्स यस सर। जो प्रोसेस कटिंग कॉस्ट है, कटिंग कॉस्ट इज लो, मशीनिंग कॉस्ट मैंने ये कर रहा हूँ, कटिंग कॉस्ट इज cheaper than the other process. Cut virtually many material, means, from hard material to soft material, like a hard steel, mild steel, copper, brass, aluminum, soft material.
So mild steel to hardened steel to aluminum and brittle material like glass, ceramics, quartz, stone. Okay, means a variety of materials can part by this abrasive water jet machining process. Okay, by selecting different suitable parameters. Okay, means what type of material do you want to cut? You have to select different process parameters. मैंने बताया ठीक है flow rate, abrasive particle size, abrasive particle type, nozzle diameter, okay, stand off distance, okay, process parameter, suitable process parameter select करनी है और which type of material do you want to cut? Okay, cut thin stuff or thick stuff, whatever it is, means अगर थिक मटेरियल है वो भी काट कर सकती है, थिन मटेरियल भी काट कर सकती है. Okay. Make all sorts of shapes with only one tool. Okay. मीन्स इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा दूसरा टूल की ज़रूरत नहीं है. एक नोजल है, नोजल से काटे. इवन बाकी जो सेटअप है वो तो stationary and only tool is a nozzle. Okay. And the nozzle पर ही abrasive particle भी है mix होगी. Okay. So make all the sorts of shapes with only one tool. And so nozzle से और what type of do you want to cut the shape, किस टाइप की शेप की जरूरत है, किसको फल की काटिंग की जरूरत है, और नोजल से by moving the nozzle according to the profile of cut, you can get the different shapes of the. Okay. नो हीट जनरेटेड, हीट जनरेट नहीं होगी क्योंकि इसमें वाटर वाटर फ्लो हो रही है एट रूम टेम्परेचर. ओके. तो एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल्स एंड द ऑफिस, तो नो हीट इज जनरेटेड. Leaves is setting smooth finish, thus reducing the secondary operations. Clean cutting processes without gases or oil. means इसमें uh, जो कटिंग सरफेस मिलेगी वो क्लीन होगी, क्लीन सरफेस मिलेगी. इसमें ऑलरेडी वाटर यूज हो रही है. ओके. सो नो नीड टू use the gas or oil for cleaning purpose. Modern systems are now very easy to learn, are very safe. So, safe automation machines are very safe. Safe machining process, not shake, no heat generate, no the chances of getting उसमें टूल शार्पन टूल की जरूरत नहीं है. तो नो काटिंग होने का, एक्सीडेंट होने का भी चांसेस नहीं है. Machine stocks of thin parts all at once. Okay, so these are the advantages. Some disadvantages are there, unlike machining of grinding, water jet cutting does not produce any dust or particles that are harmful if inhaled. Okay, means अगर ग्राइंडिंग और कटिंग हो रही है, तो जो डास्ट ये होगी, वो डास्ट के तरफ से स्टोर करनी है. अगर वो इनहेल होगी देन इट में causes some harmful. Okay. The carpet in water jet cutting is very small and very little material is affected. तो ये डिसएडवांटेज में क्यों चलो पसंद, एडवांटेज में होना चाहिए. Water jet cutting can be easily used to produce the prototype part very efficiently. An operator can program the dimensions of the part into a control station, and the water jet will start the part also exactly as programmed. This is much faster and quicker than drawing detailed frames of a part and then having a machine part of the part also.
मीन्स तो नोजल को मूवमेंट करा, नोजल का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक भी हो सकती है, और प्रोग्राम करके उसको मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कटिंग प्रोफाइल एंड मूव द नोजल. Okay. Water jets are much lighter than equivalent laser cutters, and are mounted on a automated robot. This reduces the problems of flashing and helping the robot as well as taking less energy. पता नहीं ये एडवांटेज में आना चाहिए, उसकी डिसएडवांटेज में डाल दिया. ओके. ओके. Yes, sir. So thank you. Any query? No, sir, no query. Okay. So is it clear? क्लियर है ना तो कॉन्सेप्ट. Yes, sir. मुझे तो क्लियर है सर. और किसी